ऑलराइट, सो आपके पास आईडीएस के अंदर डिफरेंट कैटेगरी के क्रिमिनल्स होते हैं। तो साइबर क्रिमिनल जो होता है वो बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, ठीक है, जिसका मेन पर्पस होता है टू गेन सम फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। तो मोस्टली दे आर यूजिंग आइडेंटिटी थेफ्ट, दे आर यूजिंग डेटा थेफ्ट, और उस डेटा स्टील करने के बाद फिर उसको रैंसम करते हैं, ठीक है, और थेफ्ट ऑफ क्रेडेंशियल्स भी कर होते हैं। एंड देन यू हैव एक्टिविस्ट, जो बेसिकली कौन होते हैं, जिनका मेन या तो इनसाइडर्स होते हैं या आउटसाइडर्स होते हैं, और वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, बहुत लो एक्सपीरियंस के हैकर्स होते हैं। बट उनका मेन पर्पस ये होता है, इट इज़ टूवर्ड्स सोशल एंड पॉलिटिकल कॉज, ठीक है, और वो अपने ही पॉलिटिकल कॉज को प्रमोट कर रहे होते हैं, पब्लिसाइज कर रहे होते हैं। तो उसके लिए देर यूजिंग वेब डिफेसमेंट, जिसके अंदर वो बेसिकली वेबसाइट को डिफेस कर रहे होते हैं, अपना ख़ुद का स्लोगन लगा देते हैं दैट वी यू हैव बीन हैक्ड वगैरह वगैरह। यहाँ पे वो डॉस अटैक्स कर रहे होते हैं, या थेफ्ट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा कर रहे होते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ठीक है, उसके अंदर आपके पास आ जाती हैं ग्रुप ऑफ हैकर्स जो बेसिकली स्पॉन्सर्ड हुए हुए हैं बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, विच मीन्स कि गवर्नमेंट उनको पे कर रही है कि वो जाके सैबोटाज करे दूसरी एक्टिविटीज़। एंड मोस्टली दे आर यूजिंग लाइक ए पी टीज़ इज़ लाइक अ वेरी पावरफुल टूल। ना इट्स नॉट लाइक अ टूल, इट्स लाइक अ स्ट्रैटेजी। देन यू हैव अदर्स, जिसके अंदर हॉबीस्ट आ जाते हैं, हैकर्स क्रैकर्स, जिनका काम होता है कि वो नई वनरेबिलिटीज़ ढूंढें, ठीक है। तो वो बेसिकली अटैक रूट किट्स यूज़ कर रहा होता है। नाउ क्लासेस क्या होती हैं इंट्रूडर्स की? आपके पास तीन क्लासेस होती हैं, एक होती है अप्रेंटिस, एक होती है जर्नीमैन, और तीसरा होता है मास्टर। जो अप्रेंटिस होता है, एज इट्स नेम स्टेट्स, बहुत बेसिक है। वो बेसिकली जो पहले सी टूल्स बने हुए हैं उनको यूज़ कर रहा होता है, उनको यूटिलाइज़ कर रहा होता है फॉर एक्चुअली डिफेंडिंग अगेंस्ट, not defending against, but basically they're using it फॉर हैकिंग। तो उनको स्क्रिप्ट किडीज़ कह रहे होते हैं। जो जर्नी मैन होते हैं ऑन दी अदर हैंड, उनके पास अब थोड़ा सा कंट्रोल होता है, उनको थोड़ा सा समझ में आता है, हाँ भाई इसको थोड़ा सा एडिट कैसे करना है अकॉर्डिंग टू द वनरेबिलिटीज़। एंड मास्टर ये है कि अब वो कुछ भी कर सकता है, ही हैज़ ऑल द फ्रीडम। क्लासिकल जो हैकर्स होते हैं उनका मास्टर्स कह रहे होते हैं, ठीक है, दे कैन एक्सप्लॉइट एनी न्यू वनरेबिलिटी एंड क्रिएट एनी न्यू टूल किट्स दे वांट। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रूजन, तो इंट्रूजन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक होता है कि अगर आप अपना लैपटॉप अनअटेंडेड करके छोड़ दें, एक है कि अगर आप फेक कॉल करें, और आइडेंटिटी थेफ्ट बेसिकली कि आपने फेक कॉल करी और क्रेडेंशियल्स मांग लिए, ठीक है, या फिर आपने डिफेस कर दिया वेब सर्वर को, आपने पासवर्ड्स क्रैक किए, आपने क्या कहते हैं, कुछ सेंसिटिव डेटा बेसिकली एक्सेस कर लिया, मेडिकल रिकॉर्ड्स एक्सेस कर लिए, पैकेट स्निफर्स यूज़ कर लिए क्रेडेंशियल्स के लिए, ठीक है, या फिर एक अनसिक्योर मोडेम पर आपने डायल किया और आपने पूरा नेटवर्क का एक्सेस ले लिया। नाउ आईडीएस के तीन कंपोनेंट्स होते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और सिक्योरिटी इंट्रूजन में फ़र्क ये है कि सिक्योरिटी इंट्रूजन जो है वो बेसिकली वायलेशन है, ठीक है, कि अनऑथराइज एक्ट है, कि आप बेसिकली किसी की बाईपास कर रहे हो सिक्योरिटी में। इंट्रूजन डिटेक्शन ये है कि वो बेसिकली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई कि क्या इंट्रूजन हुई है या होने वाली है। दैट इज़ बेसिकली आईडीएस। सो आईडीएस के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, सेंसर, एनालाइजर्स एंड योर यूज़र इंटरफेस। सेंसर बेसिकली ये है कि जो आपका डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इट्स बेसिकली योर इनपुट, ठीक है, जो एविडेंस देगा कि हाँ भाई इंट्रूजन हुई या नहीं हुई है। सो डेटा, जो भी डेटा आ रहा है ना, वो बेसिकली आपका सेंसर है, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लॉग फाइल्स, नेटवर्क ट्रैफिक, और सिक्योरिटी सिस्टम कॉल्स। जो एनालाइजर्स होते हैं वो बेसिकली एनालाइज करते हैं बेस्ड ऑन योर डिफरेंट एनालाइजर्स। शायद एक एनालाइजर सॉरी एक एनालाइज़र दूसरे एनालाइज़र से कनेक्टेड होगा, या फिर डिफरेंट जो सेंसर से जो डेटा आ रहा है उसको देखते हुए वो क्लासिफाई करते हैं, हाँ भाई क्या इंट्रूजन हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो फिर क्या एक्शंस लेने चाहें टू प्रोटेक्ट दमसेल्व्स और टू मिनिमाइज द डैमेज। यूज़र इंटरफेस बेसिकली ये है कि आप व्यू करा दो कि इंट्रूजन हुई है नहीं हुई है। समटाइम्स दिस इज़ इक्वेटेड टू योर मैनेजर और टूवर्ड्स योर डायरेक्टर, और समटाइम्स इट इज़ योर console component. Now, intruders behavior. So we have been talking about what are intruders, different types of intruders and their levels, examples of intrusions. But how do you usually behave? कैसे करते हैं intruders? तो सबसे पहली चीज़ जो वो करते हैं वो basically target acquire करते हैं. So if you have looked at any sci-fi movie related to hacking, the first thing that they do is they come up with a plan कि इस target system को
एक्सप्लॉइट कैसे करना है, उसकी वनरेबिलिटीज़ ढूंढते हैं सही है। तो वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। इसकी एग्जांपल्स क्या आपके पास, इसकी एग्जांपल ये है कि या तो वो बेसिकली अगर एक ईमेल सर्विस में जाएं तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ एनिग्मा, ठीक है, अगर आपने इमिटेशन गेम देखी है तो उसके अंदर जो भी जो मैसेजेस जो जर्मन कन्वे कर रहे थे, जो कम्युनिकेट कर रहे थे, उसके एंड में हमेशा हाइल हिटलर लिखा हुआ था। सो उसके थ्रू आपने बेसिकली ये रिकग्नाइज़ कर दिया कि एक पैटर्न ढूंढ लिया। तो आप भी एक फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी टारगेट सिस्टम के अंदर अगर आप एक ईमेल भेज रहे हैं और सर्वर से कोई ईमेल आ रही है, यू कैन आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड देन ट्राई टू फाइंड exploits in that. So that's basically this point: send email and analyze entire client server response. या फिर आप उसका कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर समटाइम्स होता है मूवीज़ में, दे शो द इंटायर ब्लू प्रिंट राइट, एंड देन देर लाइक आइडेंटिफाइंग कि उसका टेक स्टैक क्या है, फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, वगैरह वगैरह, की सिस्टम्स ये सारे आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो लुक एट इट्स नेटवर्क यूजिंग nmap, और यू कैन ऑल्सो लुक एट इट्स DNS लुकअप, मतलब उसकी टारगेट नेटवर्क पे DNS लुकअप से, और दूसरे टूल्स हैं डिग होस्ट, query who's DB, I think that's who is DB के नाम से database technically है। Then you need some sort of initial access, right? So कोई initial access basically चाहिए होगा ताकि आप फिर अपनी intrusion start कर सकें। So initial access के अंदर it needs to be कि कोई weak authentication होगी, कोई vulnerability होगी, so you need to either install a malware or do some phishing और सम सोशल इंजीनियरिंग अटैक, जिससे आप किसी तरीके से एंटर हो सकें सिस्टम के अंदर, राइट। सो ब्रूट फोर्स कर रहे हो, या फिर जो ऑलरेडी जो बहुत सारे आपके हाँ बेसिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वनरेबिलिटीज़ इन योर CMS इज़ बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो पासवर्ड आप बेसिकली एक्सेस करना चाह रहे हैं किस तरीके से। Then we have privilege escalation. So once you have entered it, now you want to increase your privilege, right? So you need to find some ways as to how you can escalate your privileges ताकि आपके पास ज़्यादा access आ सके. So for that, you're basically scanning the system with exploits, or installing sniffers for passwords, ठीक है। या फिर आप पहले से captured passwords जो हैं एडमिन के, जैसे एडमिन होता है या दूसरे कोई passwords होते हैं frequently यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। Then you have information gathering or system exploits. Once you have your admin privileges, now you're looking at कौन सी और services को आप exploit कर सकते हैं और कौन सी आप उनको modify कर सकते हैं। तो you're basically scanning files for detailed information, you're looking at different documents, you're trying to get access on that network. And then you need to maintain that access के मतलब ये नहीं है कि मोस्टली जो ज़्यादा पावरफुल जो चीज़ होती है वो ये है कि आप उस सिस्टम पे बैठे रहो, उसको मॉनिटर करते रहो, उसमें लाइक यू कैन गो बैक टू दैट सिस्टम व्हेनेवर यू वांट। सो सम हाउ यू वांट टू मेंटेन योर एक्सेस, राइट, कि इस अटैक के बाद तुम्हारे पास फिर भी एक्सेस हो फॉर फ्यूचर अटैक्स। So you need to maintain that. So you can somehow change or modify its configurations or add some fake authentications ताकि आप बार बार उसके अंदर लॉग इन रहो, ठीक है। So you can do that by installing remote admin tool. You can have some admin password, modify or disable some security checks on your IDS, ठीक है। Then you need to cover your tracks, right? So once you have done your job, now you need to just cover yourself. So you can do that by editing the audit log, ठीक है, अपनी rootkits hide करना, ठीक है। You can do this by attack rootkits install कर दो और अपनी log files को edit कर दो. So that was related to the behavior. Now let's talk about the types of IDS, right? So intrusion detection systems जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं. We will be talking about these in a lot of detail. But for now, to give a very brief introduction, host space जो आपके पास IDS होते हैं उनका बेसिकली होता है सीन, दे आर बेसिकली मॉनिटरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिंगल होस्ट, ठीक है। सो सिंगल होस्ट मशीन की जो भी उसके इवेंट्स हैं, प्रोसेसिंग जो हो रही है, जो उसके सिस्टम कॉल्स हो रहे हैं, लॉग फाइल्स जो भी एक सिस्टम के, वो बेसिकली एक होस्ट स्पेस HIDS इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम कर होता है। जो भी नेटवर्क का काम है रिलेटेड टू योर नेटवर्क ट्रैफिक, योर ट्रांसपोर्ट, योर ऐप प्रोटोकॉल्स, राइट, उस पर जितना भी जो भी मॉनिटरिंग हो रही है वो नेटवर्क बेस करता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड या हाइब्रिड बेसिकली ये है कि वो दोनों कॉम्बिनेशन है, होस्ट स्पेस का भी और नेटवर्क बेस का भी। नाउ
So now what you want to do is you want to identify कि intruders कौन से हैं, right? So intruder का कोई behavior होगा और एक normal user का जो behavior होगा. But if we knew who the intruder was that easily, then we would have very secure systems. But that's not the case because आपका जो user जो authenticated और जो आपका unauthorized, sorry, authorized or unauthorized जो users का जो behavior है, that sometimes overlaps, right? So you can see over here, this is for the authorized, which is in blue, and the black is for unauthorized, and there's some green, which is for some overlapping, right? सो यहाँ पे एवरेज बेसिकली ये है कि ये एवरेज अनऑथराइज है. यहाँ पे अगर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम चलता है तो वो बेसिकली बोलेगा हाँ भाई ये अनऑथराइज है, एंड अगर यहाँ पर है देन यू वुड से दैट्स ऑथराइज. बट व्हेन इट्स इन द बिटवीन it will have some problems, right? So it will have some false positives and false negatives. So false positive is basically identifying a user as an intruder, right? Which is not that bad. But a false negative in that case, in this case, would be very, very harmful because उसके अंदर आप ये बोल रहे हैं that an intruder is a user. तो आपने intruder को सारे user का access दे दिया, which is not good. So ideally what you want to do is you want to have a very high detection rate against these intruders, right? So जो भी आपने detect किया आपने सही detect किया overall with the total detection, total attackers, and you want to make sure that this false positive and false negative rate is as low as possible. Now आपके पास जो base rate fallacy जो है, ठीक है, that is related to your false sense of security, right? So सीन ये होता है कि अगर आपके पास बहुत कम आइडियास हो रहा है, सो यू हैव दिस फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि मे बी अटैकर्स इंट्रूड कर ही नहीं रहे, एंड इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ intrusions, right, then it would mean, sorry, a lot of like notifications of it being intruded, then you would try to ignore it. So इस केस के अंदर मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि शायद इतने ज़्यादा intrusions नहीं भी हो रहे, लेकिन आपका आइडियाज़ बार बार स्पैम करे जा रहा है कि इंट्रूजन हुई है. सो नाउ यू वुड आइदर हैव टू एनालाइज इट, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर आप उसको इग्नोर करना शुरू कर दोगे, ठीक है, कि भाई बार बार क्यों बज रहा है अलार्म, ठीक है. या फिर अगर कोई अलार्म नहीं बज रहा, उस केस के अंदर ये कि इंट्रूडर्स बहुत सारे हैं लेकिन आपके सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो आपके पास एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि हाँ भाई मेरा सिस्टम बहुत सिक्योर है, बट इन एक्चुअल दैट्स नॉट द केस. सो बेस रेट पॉलिसी ये कहता है कि इन यूजली होता है ये कि आपके पास इंट्रूजन्स होते हैं ना, वो 1 in 1000 लाइक का रेट होता है, लाइक 0.01% होता है, कि एक्चुअल इंट्रूजन्स काफ़ी कम होती हैं. तो उस केस के अंदर आपके पास पहले से रेट बहुत कम है, और आपका सिस्टम भी अगर डिफ़िकल्ट है डिटरमाइन करने में कि एक इंट्रूजन हो रही है या नहीं हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहा है कि मतलब सिक्योर है लेकिन असली में वो है नहीं, ठीक है, क्योंकि बेस रेट उसका वैसे ही रेट बहुत कम है कि वो इंट्रूजन डिटेक्ट ही बहुत कम कर रहा है, और सही से आइडेंटिफाई भी नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास इतने एग्जाम्पल्स भी नहीं हैं. तो इस केस के अंदर इट गिव्स यू दिस fallacy, this base rate fallacy. Now what are the requirements for an IDS, ठीक है, कि IDS के लिए कौन कौन सी requirements बहुत important है. First of all, it should be continuously running. It should not have some it should be like fault tolerant, ठीक है, अगर एक सर्विस डाउन होती है तो दूसरी सर्विसेज होनी चाहिए, ठीक है. इट शुड बी स्केलेबल, उस पर ओवरहेड नहीं आना चाहिए ताकि बैठे ना सर्विस. It should be adaptable to the user behavior या system changes. It could be configured at any point, dynamically convert होना चाहिए, and it should resist subversion, which basically means कि अगर कोई अटैकर, जैसा हम यहाँ पे बात कर रहे थे मेंटेनिंग एक्सेस के अंदर, कि वो अपनी ऑडिट बेसिकली कन्फिगरेशन फाइल्स और ऑथेंटिकेशन चीज़ें चेंज कर रहा था, आईडीएस का सिस्टम चेंज कर रहा था, तो वो बेसिकली यहाँ पे अलाउ ना करें. So yeah, I've talked all about everything over here. Let's talk about analysis approaches, right? So how do you analyze? So you can analyze it in two ways. The first way is by anomaly detection. This is perhaps the most simplest and the most efficient, in which you're basically saying कि आपको ये पता चल गया कि यूज़र का कौन सा बिहेवियर है, और जो यूज़र का बिहेवियर नहीं होगा उनको आप कंसिडर कर रहे हैं एज अनॉमलीज, राइट. सो this is what we actually want. But again, since you don't actually know who's the actual user, and you don't actually know who is basically your unauthorized user, तो base rate policy की वजह से we are not using anomaly detection because it's much harder to use this.
and also that anomaly detection, the other one is called like signature and heuristic, but anomaly detection is the only detection which can counter zero-day attacks and unknown or zero-day attacks. All right, so anomaly detections के अंदर हमारे पास different methods हैं. We have statistical, knowledge based, and machine learning. Each have their own perks and their own cons. So perks basically statistical model में ये है कि that's very simple, right? It is, yeah, it's very simple, but assumptions बहुत require करता है because univariate model के अंदर आप basically एक model को independent consider करते हैं, multivariate में दो को consider कर होते हैं, more than दो को कर होते हैं, इनकी dependencies को assume कर होते हैं. इन नॉलेज बेस दिस इज़ मोर रोबस्ट बिकॉज आपके पास पहले से कोई नॉलेज है और उसकी बेसिस पे आप एनालाइज कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं कि हाँ भाई ये इंट्रूजन है या नहीं है. सो दैट्स मोर robust, but again the problem is that you need a lot of time and resources to collect a lot of information. And then the third is machine learning. So machine learning in there you have different approaches related towards Markov models, Bayesian networks. These are not machine learning, but these are AI. That would be a better word over here. So BaseNet, neural networks, machine learning, Markov model, fuzzy logic, genetic algorithms, clustering, right? These are all AI models on which you're basically saying that you have some trained data, and on the basis on that trained data, you're identifying that this is an intrusion or not. But the problem with machine learning algorithms is that it requires a lot of resources. Then we have signature and heuristics. So signature and heuristics basically ये difference ये होता है कि signatures होते हैं they're set of data patterns, malicious data patterns, कि हर एक hacker ज़्यादा अपनी signature छोड़ रहा होता है, या एक malicious code का अपना एक signature होता है, मेलवेयर का अपना एक सिग्नेचर होता है, हर एक वायरस का अपना एक सिग्नेचर होता है. या फिर आप उसको एक अटैक रूल्स या पेनिट्रेशंस के बेसिस पे, पेनिट्रेशन के जो रूल्स हैं उसकी बेसिस पे आप उसको क्लासीफाई कर रहे होते हैं, विच इज़ बेसिकली ह्यूरिस्टिक्स. सो लेट्स टेक अ लुक एट सिग्नेचर्स फर्स्ट. सो सिग्नेचर्स जो हैं, ठीक है, वो आपके पास दे शुड बी लार्ज इनफ to minimize the false rate but still detect a large number of malicious data. They are widely used in NIDS, ठीक है, antivirus products and network scanning proxies. They are low cost, and they're low cost, they have a low cost and time, but new malware will always require new signatures, ठीक है. And again, signatures and heuristics cannot detect zero-day attacks. Heuristics is known for rules of identifying penetrations. Snort is an example of this. Now let's talk about one of the type of IDS, which is host-based IDS. So host-based IDS जो होता है, that is basically, again, it's based on a host, right? So it is related to both the external and the internal intrusions for a host, which can be done by NIDS, which is Network Intrusion Detection System, or using firewalls. So it is mostly using anomaly या heuristic approach. Again, here अगर anomaly and heuristic approach use कर रहे हैं, then it can counter the zero-day attack. होस्ट बेस वो भी यूज़ करता है, सिग्नेचर और ह्यूरिस्टिक भी यूज़ करता है, बट उस केस के अंदर वो फिर जीरो डे अटैक्स को प्रिवेंट नहीं कर सकता, ठीक है. नाउ होस्ट बेस के जो डेटा सोर्सेज होते हैं, देर मोस्टली रिलेटेड टू सिस्टम कॉल्स, ठीक है. दे कैन बी योर ऑडिट लॉग्स, ठीक है, दे कैन बी योर फाइल इंटेग्रिटी चेकसम्स इन, या फिर रजिस्ट्री एक्सेस. ना सिस्टम कॉल की जो ट्रेसेस होती हैं बेसिकली आप लिनक्स पे कर रहे होते हैं, क्योंकि लिनक्स पे कॉल की सिस्टम कॉल्स होती हैं, विंडोज़ पे नहीं होती. विंडोज़ पे भी होती हैं लेकिन उस पर DLLs बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो बेसिकली प्रिवेंट कर रही होती हैं कि आप उनको एक्सेस कर सकते हैं. तो उस केस के अंदर हम फिर रजिस्ट्री एक्सेस यूज़ कर रहे होते हैं, विच इज़ ओनली फॉर लाइक विंडोज़. So with blue this is basically the disadvantages. Then in log files के अंदर भी मसला ये होता है कि कभी कभार आपको लॉग फाइल्स उसकी प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं मिल रही थी, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट टू लाइक अ प्रॉपर फॉर्मेट. एंड इन टर्म्स ऑफ फाइल इंटेग्रिटी चेकसम, यू नीड टू मेक श्योर दैट योर चेकसम इज़ नॉट ऑल्टर्ड. उसके जो ओरिजिनल चेकसम है वो ऑल्टर्ड नहीं हुआ है. तो फिर आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई इसकी इंटेग्रिटी, फाइल की इंटेग्रिटी चेंज हुई है या नहीं हुई है, वायलेट हुई है या नहीं हुई है. So you can do that using tripwires. Then you have distributed HIDS. अब उसके दो disadvantages बात करते हैं, फिर हम उसके normal architecture पे बात करते हैं. बल्कि let's do this in the next video because इसके ना एक और part है which is related in the next video, so एक साथ ही cover हो जाएगा.